हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोवा। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे एक 2D इमेज को 3D वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं ChatGPT, फोटोरूम और कैपकट के जरिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ChatGPT ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक अमेजिंग सा प्रॉम्प्ट जनरेट करना है ChatGPT के जरिए। प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद आपने डायरेक्ट आ जाना है लियोनार्डो AI वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद आपने जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। सिंपली कुछ सेकंड के बाद आपका जो AI इमेजेस हैं वो जनरेट हो जाएंगी। किसी भी इमेज को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने फिर इमेज डाउनलोड होने के बाद आपने फोटोरूम ऐप में चले जाना है। जाने के बाद आपने रीटच पर क्लिक करना है और इमेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से कैरेक्टर को रिमूव करना है। सिंपली हमने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर है वो रिमूव हो चुका है। अब इमेज को हमने सेव टू गैलरी कर देना है। फिर आपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारा जो है वो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। सेम प्रोसेस करना है, एक्सपोर्ट सेव टू गैलरी। अब बारी आती है एडिटिंग की। एडिटिंग के लिए हम कैपकट में चले जाते हैं। Relics of kingdoms past and crowns of ancient kings. I've heard stories of distant lands, realms I long to reach. Your voice, it beckons me to go to worlds unexplored.